Today, till previous class, lot many theoretical topics, all the algorithms, how the graph is, what is graph, how the graph is represented. All this topic we have covered. Hardly one or two topics are left, and we had ended the previous day class with Warsaw's algorithm. It was just at introductory level. We haven't completed anything yet into that. But now today what I have decided, since already we have studied lot many topics in graph, why don't we implement some of the graph problem? Because till tree तो हमने काफी implementation कर लिया coding की. In graph हमने अभी तक कुछ किया नहीं है. As far as the coding is concerned, we are only at theoretical level. And also, after a couple of classes, you will be given a topic for mini project which each and everyone has to develop. That will examine what knowledge we have developed from these sessions and how honestly you guys have worked. Okay. So, and that topic, of course, will be related. Some problem I shall be giving you on related to graph theory. That means, ये बोलना उचित नहीं है कि it is related to graph theory. The problem will be in such a way that graph theory idea must be used to solve that. So, are we ready? Shall we start implementing? And I'll tell you one thing very clearly, as far as the implementation is concerned, we already have seen graph can be represented using adjacency matrix form as well as linked representation. We shall be focusing right now on adjacency matrix representation. Okay, idea remains same for all. And we are following the quick way of representation. So open your computer and environment editor Eclipse, and we will start. The first thing what will happen when we see the first topic of graph, the first question comes, how the graphs are represented. Graph one file already that was shared to you. Let me share the screen first. Okay. So now I think a screen is visible to you all. Okay. And already this OneNote file which we had discussed couple of days earlier. Okay, how the graphs are represented. As far as the graph is concerned, you can see we have two. One is array which represents vertex, all the vertices of the graph, and secondly, we have adjacency matrix. Let us assume the same figure. Okay. Clear? Are you all guys ready? Have you started Eclipse? Don't just see, do it along with me. मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे. Then only I can tell you what is the idea which I am going to implement and how that thing will be done into the code. So I have started Eclipse as well. Okay.
Now, I have created one graph one project, and in this, let me add first of all a class which is containing main functions. Graph demo, it will having main functions. There is no need of constructor and all that. Okay, so finish. As usual, I'll just check the project is ready. Save and run the project. That ensures everything is okay. Fine. All are done till this point. Now we go for representation of graph. I'm having right now very simple idea. Very simple. No object-oriented design, nothing else, nothing I am following right now. I don't want to make things complex. Later on, your idea will be to make oops design. So as we have already seen, ग्राफ के अंदर एक क्या होता है सबसे पहले एक वर्टेक्स एरे. One will be taking array which represents all vertices, and this array I shall choose of in string type. क्योंकि वर्टेक्स का तो नाम होता है ना, सब नाम है अलग अलग, है ना, ABCD या फिर the whole city name, anything I can give. So as already I told you, let me have both the screens simultaneously. एक साथ side by side. I would like to show you. Now see, in graph, this figure, what you are seeing, can you see the graph picture? 4 vertices. And name क्या है? ABCD. मैंने A को स्टोर कर दिया. Directly I am storing to program right now. Later on, you will modify to take all those keyboard data inputs and all. So A and B and C and D. All these vertices have been stored in a vertex array. And naturally, this has to be made as a static. Because I'm just keeping all the informations and trying to use those members by all the functions. So without oops concept I'm working, so all the thing has to be made a static. You must be knowing Java language. Why do we create a static member?
Now, यहाँ तक सब लोग comfortable by looking this picture? Coding हो गई यहाँ तक? Now let's see. Now we will create what? Adjacency matrix, right? And in matrix तो all integer values store करते हैं. तो int type के मैंने क्या create कर लिया? 1 adjacency matrix. Adjacency matrix. है ना? Now this will be two-time matrix, मतलब two-dimensional. Okay. So in this matrix, what we are going to store? Initially, we have 4 vertices. Okay. Just I shall be storing 0, 0, 0, 0, 4 times. In this way, matrix is being set. Matrix is being set. Any problem in setting matrix? Initially, I am putting 0, then later on I shall change by looking the figure. Now in figure, we say A is connected with B. So I'm changing this one. Then A is connected with C. I'm changing this one. A is connected with D. Then I'm changing this one. Are you getting? Then secondly, B. B is connected with A. So I'm changing it to 1. Then B is connected to C. So I'm changing this third column to 1. First, 0th column represents A. First column represents B. Second indexed column represents C. Third indexed column represents D. Then for C, C is connected with A. C is connected with B. Then finally D. D is connected with only A. So this is the adjacency matrix I have set. All figure paper पे draw किया मैंने. Initially to keep our goal simple, मैं इस particular portion में involve नहीं हो रहा हूँ कीबोर्ड इनपुटिंग के चक्कर में. Okay. Till this point, is there any problem? Look, this is the matrix which you would have stored in earlier days while discussing 0 1 1 then 1 0 1 0 then 1 1 0 0 1 0 0 0. So this figure graph की representation computers memory हो गई कितनी easily. Now on graph, we perform first of all DFS algorithm, depth first search. In depth first search, what we had seen, a start vertex will be given, right? कौन से vertex से start करना?
start vertex is A. Okay. So we can see where the A is stored. A is stored at 0th location. A is stored at 0th locations. But in this figure, we had started from B. So B is stored at which locations? 1th locations. So we must say from where to start. We will say the start vertex index. The start B है. तो B की इंडेक्स कितनी दिख रही है? 1. मैं कमेंट में लिख देता हूं कौन सा वर्टेक्स? B. B वर्टेक्स से हमें प्रोसेस को शुरू करना है. B की इंडेक्स 1 है. If you are inputting through keyboard, then you will search B into vertex array and you will fetch the index. Got it? Can you hear my voice? Okay. तो वर्टेक्स का 1th लोकेशंस. वेरी गुड. तो वर्टेक्स के 1th लोकेशंस तो वो है. द इंडेक्स तो 1 हो गया. सो आई हैव रिटन 1. Now in DFS algorithm, what we had seen when we implemented using a stack. Do you remember the process? We need to take one stack here. That means we have to design the stack portion first now. Anna, let's maximize this screen and get ready to create a stack. Now add new class into this. Let's add into the same default package. Let's keep the thing simple. A stack basics. Okay. Let's have one constructor also. Now in a stack, you have already seen creating a stack using a linked list concept as well as using array concepts. Which stack we will create right now? Which approach? Array or linked list? Linked list. Good. Then go create. Start creating. Okay. For linked list creations already we have seen we have to create a nodes which will be nothing but top. So top is made to null in constructor. So before that we have to create a node to add one more class. Add one more class. I gave the name nodes. I added into the same package, default package. You can create another package also. Not an issue. Nodes. Node will be containing two parts. Anna? One is to store data. Now, मैं stack में कैसा data रखना चाहता हूँ? दिख रहा है ना? Age informations I am keeping.
Right now, age is nothing but, see the adjacency matrix. These all zero या non-zero item give you the edge between row index and column index item. That means a starting vertex index will be a and ending vertex index. Source vertex के कौन से index है? For example, you can see, just tell me the answer. You can see by looking this matrix that there is an edge between B and C. Is it correct? Yes. So what is the index of B? And index of C? That means there is an edge between 1 and 2. Is it correct? Yes. So using adjacency matrix representations, we can easily represent edge by, we can easily represent edge so I'm just naming edge, and I can tell you that edge is represented by source vertex index and destination vertex index. There can be many ideas, but the best is only have index. No need of having vertex name again and again. That will consume lot of memory. Vertices are just stored in one place. And if I want to know which is the vertex at SBI, I know the index. Directly at that particular index, I can read that vertex name from vertex array. So I'm representing edge by using this. So vertex index and got it? Now this dot source vertex index assigns SVI. Are you comfortable with this idea? Convinced? Done. Then do it again. Do it along with me. So I created a constructor. Right now, that is not having weight. अगर weight भी होगा तो एक और field बढ़ा देंगे. नहीं. और weight तो directly उसी में stored होगा. Matrix के form में field नहीं बढ़ाएंगे. No need. क्योंकि मैट्रिक्स में तो डायरेक्टली हम उस वैल्यूज को एडजेसेंसी मैट्रिक्स में स्टोर कर लेते हैं बाय यूजिंग नॉन जीरो एंड जीरो आइटम. हमें डिजाइन भी अच्छा बनाना है और ये भी देखना है कि मेमोरी कंजम्पशंस भी ना बढ़ जाए. सो नाउ इन नोड, नाउ कम टू नोड. इन नोड डाटा विल बी ऑफ टाइप edge. Are you getting? In every node, there will be one data of type. Data will be, and then there will be link part of type node. वो तो हम लोग already जानते ही. यहाँ तक सब लोग ओके?
ये तो हम स्टैक का काम कर रहे हैं. Several time we created a stack. Now एज टाइप की डाटा इसमें हम रिसीव कर लेते हैं. And as usual, my coding, this dot data assigns data. Formal parameter को मैंने स्टोर कर दिया. And link part is initialized to null. So this is node completed. Then we shall go to a stack. Look at this. A stack is containing just a top pointer, and in the stack, we have to create now what? Push and pop method, right? Push, है ना? Push method. Task of push method will be what? Taking the data of type H and pushing into the stack. And now a stack. What is the first thing? Let's check what is our stack empty. क्या मेरा stack खाली है? है ना? ये सब तो पुरानी बात है. आप इसमें ये नहीं कर सकते कि सर रुकिए. एक तो मैं बहुत स्लोली कर रहा हूं, बट स्टैक की जो काम थी, अगर टॉप की वैल्यू मैं नल ले लिया, चेक करेंगे कि अगर टॉप नल है, दैट मीन्स स्टैक के अंदर पहले से कोई भी डाटा नहीं है. तो आवर रोल इज वेरी सिंपल. टॉप assigns new node, and in that node we will pass this data. Finish. When a stack is empty, things are done. है ना? Insertion at beginning करना होता है. When a stack is not empty, then what happens? We have to create a new variable, a new node at a different instance variable. Suppose anything like Z. Z assigns this. So new node is created at Z. अब यार ध्यान से विजुलाइज करो. इंसर्शन एट बिगिनिंग मींस वह क्या हो जाएगा? इस नोड के रेफरेंस पर, इस नोड के लिंक पार्ट को रेफरेंस कर देना है फर्स्ट नोड से. सो जेड डॉट लिंक पार्ट assigns top. Please show note part. विशाल, why? क्या हम लोग पहली बार ये कर रहे हैं? स्टैक को हमने प्रीवियस कितने एप्लीकेशंस में यूज किए. क्विक सॉर्ट को नॉन रिकर्सिव बनाने में यूज हुआ. स्टैक बनाए यूजिंग लिंक लिस्ट ऑल्सो. तो कोड क्यों देखना चाहते? स्टैक में क्या स्टोर करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ये स्लाइड से. इन स्टैक यू आर सीइंग हम लोग एज टाइप के इंफॉर्मेशन को रख रहे हैं.
If any confusion, Vishal, you have, please open your microphone and tell me. नहीं बताइए. सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके. हाँ। कोई भी कठिनाई हो जरूर बताइए. ओके. बट अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस होनी चाहिए. I know that you guys have lot of papers to study, but यही तो टाइम है. 15-16 hours देना ही पड़ेगा टोटल इन दिस पीरियड में. During C-DAC courses, lot of things you have to study. The new one, previous one needs to be revised, and all lot of other mental pressures होती ही है. ये pressures तो झेलने की मेन बात है. चलो ठीक है. So z.link का क्या मतलब हो गया? न्यू नोड रेफरेंस कर दिया फर्स्ट नोड को, and thereafter first node will come on new node. That's it. उस operations complete. विजुअलाइज, पिक्चर बना के देखो. फर्स्ट नोड क्रिएट हुआ, अब फर्स्ट नोड के ऊपर दूसरी नोड. ऊपर का मतलब पहले हुआ ना, तो इंसर्शन एट बिगनिंग. इंसर्शन एट बिगनिंग तो फ्लैट है, कोई ट्रैवर्सल करना नहीं है. नई नोड बनाएंगे, नई नोड के लिंक पार्ट को रेफरेंस कर देंगे टॉप वाले नोड को जो फर्स्ट नोड है राइट नाउ. इस तरह से फर्स्ट नोड के पहले नई नोड जो जेड दिख रही है वो आ गई, एंड टॉप इज मूव टू जेड. है ना? ये टॉप क्या है आपका? एट्रीब्यूट है. It is professionally good to write attribute in this manner using this. There is nothing wrong, we can directly write, but it is good professional approach. Just by looking, you don't have to think where the from where the top comes. Okay guys, so push operations complete. Then we have to do the pop operations. Let me just copy few lines. So I did pop operations, and pop operation will return no exceptions handling and all I am doing. Let me complete first. Now pop will return, but if top is null, that means there is no data at all. So it will return null values, no object at all. Okay, it returns null objects. But if top is not null, tab yaad karo, first node is being removed. So as usual, you have to take this and reference to first node. Now Z is referencing to first node as well as top both. Is it not? Can I do like this? If I do like this, what happens? Tell me. Where now Z is? If I do like this, initializations, to which node Z will reference? Second node. Is it not? So top is at first node and Z is at second node. Picture दिख रही है?
अब टॉप के डाटा जो होंगे वो आ जाएंगे डाटा के पास कॉपी होके लोकल वेरिएबल डाटा। सो डाटा गॉट कॉपीड। अब हम टॉप के रेफरेंस को खत्म कर देते हैं। राइट, and thereafter top is moved to second node. Is it right? इस तरह से फर्स्ट नोड का रेफरेंस ब्रेक हो गया एंड गार्बेज कलेक्टर रिलीजेस मेमोरी ऑफ फर्स्ट नोड्स। क्लियर? सर नाउ टॉप इज मूव टू, हाँ बताइए भाई। सर वो नोड और एज वाला पार्ट एक बार बताएंगे क्या आप? कौन वाला पार्ट, थोड़ा जोर से बोलो। नोड और एज वाला पार्ट। नोड कौन सा हाँ, लाइन नंबर? जो हमने नोड क्रिएट किया है क्लास। अच्छा एक मिनट, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लो। नोड वाली पार्ट को फिर से समझाएं। हाँ सर। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट क्रिएट किए तो नोड के अंदर कितने पार्ट होते थे? दो पार्ट। वन पार्ट इज टू स्टोर डाटा एंड सेकेंड पार्ट टू स्टोर इट्स लिंक। यस। अब डाटा हमारा किस टाइप का है, दैट एप्लीकेशन विल टेल यू। ये फिगर देखो, हम स्टैक के अंदर एज इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं ना। सी एफ क्या है? एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी टू एफ, सी टू बी, that means think your application in a stack what you are pushing, which type of information? int टाइप। int नहीं, सोचो भाई, ये फिगर देखो, अभी परेशान नहीं हो। देखो ध्यान से इस फिगर को, जो ग्राफ वन स्लाइड शेयर था वन नोट का, इस स्टैक में क्या स्टोर्ड है? सीबी सीएफ है कि नहीं है? हाँ, तो एजेस है। सीबी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। That means in a stack what you are pushing, edge information, edge, हाँ एज। तो अब देखो डाटा एज टाइप का हुआ ना, बराबर। बराबर। अब एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज ये हो गया। हमने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले कि सोर्स वर्टेक्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स इंडेक्स। अब ये दोनों इंट टाइप की है। हाँ। दैट टू एट्रीब्यूट फॉर्म्स एज। बात समझ में आई हाँ। कि नहीं आई? हाँ आई। हाँ, तो एज टाइप के इंफॉर्मेशन जा रहे हैं इसके अंदर, नोड के अंदर। क्या परेशानी? नोड में तो अभी ये नोड के थ्रू तो हम एक ही डेटा भेजेंगे। अरे भाई, तो एक ही डाटा किस टाइप का है? एच टाइप का है। तो फिर क्यों परेशान हो? एज को ओपन करोगे तो एज के अंदर टू आइटम्स दिखेंगे ना। हाँ। उप्स का कॉन्सेप्ट कितना बेहतरीन होता है, उसको आप तोड़ तोड़ के देखो। नोड is containing data of type age. What is age? Age is combination of two integer type of item. First item represents source vertex index and second item represents destination vertex index. इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया SVI, source vertex index. नाउ स्पष्ट हुई बात? हाँ। ओके। ये सर यहाँ पे जो पुश वाला पार्ट है, हम्म,
उसमें जो सेकंड अभी नल है तो टॉप को रेफरेंस दे दिया आपने ने फर्स्ट नोड का, नया नोड का। हम्म। और एल्स में क्या किया है ये? देखो ना, अब तुम अपने पिक्चर बनाओ पेपर पे। आपके पास अब स्टैक में डाटा है, तो हमने लाइन नंबर 15 पे आए। हाँ। तो जब स्टैक में डाटा होता है, तो अब अगला नोड स्टैक में कहाँ स्टोर होगा? इंसर्शन एट बिगिनिंग होगा ना। यस। तो वही तो हो रहा है। एक नोड बन रही है, न्यू नोड, हाँ। उसको जेड रेफरेंस कर रहा है, बराबर। एंड फर्स्ट नोड का रेफरेंस टॉप के पास होगा। बराबर। तो जेड के लिंक में मैंने टॉप को कनेक्ट कर दिया। तो नई नोड अब रेफरेंस करने लगा फर्स्ट नोड टॉप को, टॉप नोड को जो पहले टॉप था, एंड उसके बाद टॉप को मैं जेड पे मूव कर दिया। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग हुआ ना। उस फंक्शंस में क्यों कंफ्यूजन हुआ भाई? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप प्रीवियस चीजों को नहीं देख रहे हो। इसमें कोई नई कोड होती तब तो। बट स्टिल क्लैरिफाई डाउट, नो इशू। बट आई वुड सजेस्ट दीज टॉपिक्स जो आप स्टैक स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तो आज की बात नहीं है। अभी भी कोई कंफ्यूजन पुश या पॉप में? अगर ये स्टैक गलत बन जाएगा तो आपका आगे का सारा रिजल्ट गलत हो। सिमिलरली पॉप में हम क्या करते हैं? टॉप अगर नल है तो हमारे पास तो कुछ नहीं रिटर्न होगा, सो रिटर्न नल। अदरवाइज फर्स्ट नोड के अंदर की डाटा को हम रिटर्न करते हैं। तो टॉप हमारा फर्स्ट नोड पे है, तो फर्स्ट नोड के डाटा को मैं डाटा लोकल वेरिएबल पे कॉपी कर लिया, और जेड को मैं रेफरेंस कर दिया सेकेंड नोड पे, लाइन नंबर 25। सो पिक्चर देखो, जेड इज रेफरेंसिंग टू सेकेंड नोड। Let me draw one, this space, let me use. See, this is first node. Okay, मान लो फर्स्ट नोड के अंदर 1 and 3 स्टोर्ड है, बिकॉज एज टाइप की इंफॉर्मेशन होगी ना। And this is of course null. This is first node to which top will reference. Now ये अभी स्टैक दिख रहा है। अब इस स्टैक पे अगर हम फिर एक दूसरी एज पुश करेंगे तो क्या होगा? एक नई नोड बनेगी। इस नई नोड को रेफरेंस कर रहा होगा कौन? जेड। इसके इस पार्ट में मान लो हम स्टोर कर देंगे 3,0, एंड तो ये लाइन हमारा क्रिएट कर दिया, लाइन नंबर 15, ये जेड वाली फिगर। एंड लाइन नंबर 16 ने क्या किया? ये रेफरेंस क्रिएट कर दिया। एंड लाइन नंबर 17 ऑफ कोड ने क्या किया? टॉप को यहां से मूव करके यहां ले आया। एंड फंक्शंस खत्म, जेड खत्म। लो, क्या पुश ऑपरेशन सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है? इसी फिगर को घुमा के ऊपर कर दो, फिगर पे हाथ रखो, राइट हैंड स्क्रीन पे राइट हैंड को रखो, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट करो हैंड को। तो दिख नहीं रहा होगा कि 30 वाली नोड ऊपर हो गई? तो स्टैक इज नथिंग बट insertion at beginning, removal at beginning in linked list.
That operation is push and pop respectively. Now our let's change this. ये हमारा हो गया stack. Stack is ready completely. Now we shall come to graph portion. अब ग्राफ सब कुछ रेडी है. अब सबसे पहले हम कौन सा काम करना चाहते हैं? ब्रेथ फर्स्ट सर्च. पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मैंने फंक्शंस का नाम दे दिया, कैपिटल में लिख देता हूं BFS. BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ठीक है. अभी हम मिनिमम कोडिंग पे फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट. मिनिमम कोडिंग इस मीनिंग से मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट फॉलोइंग उप्स डिजाइन. उप्स डिजाइन आपको सोचना है, जावा आप पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझना है और फिर बनाना. नाउ BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च की प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था, इस स्क्रीन को सबसे पहले देखना जरूरी है. डेप्थ फर्स्ट सर्च जो हमारी प्रोसेस है, वी पुश ऑल एडजेसेंट्स. हमारा करंट वर्टेक्स अभी हमारा कौन है? स्टार्ट, जहां से हम लोग शुरू किए. स्टार्ट वर्टेक्स के जितने एडजेसेंट्स हैं, पहले तो स्टार्ट वर्टेक्स विजिट हो गया. जब तक सारे के सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाते हैं, याद होगा प्रोसेस क्या था? जब तक सारे के सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना. यही था ना प्रोसेस. एंड सारे वर्टेक्स विजिट हो जाएंगे तो स्टैक भी आपका खाली हो जाए. तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, हाँ वो BFS लिख दिए, चलो अभी तो हम लोग DFS कर रहे हैं. चलो DFS. और अगर BFS करना होगा तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस होगी. स्टैक इज रिमूव्ड बाय क्यू. गुड. तो इनिशियली हम स्टार्ट वर्टेक्स के सारे एडजेसेंट को स्टैक में पुश कर देंगे. तो स्टार्ट वर्टेक्स के कौन कौन से हैं जिसको स्टैक में हमें पुश करना होगा? स्टार्ट वर्टेक्स हो गया कौन सा भाई? देखो जरा गौर से, अभी चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है. अब आपकी स्क्रीन पर कोड भी दिख रही है, वो भी दिख रहा है. स्टार्ट वर्टेक्स का इंडेक्स दिया होगा, है ना? तो स्टार्ट वर्टेक्स की इंडेक्स 1 हो गई. तो आपको 1th रो के अंदर जाके देखना होगा कौन कौन से नॉन जीरो आइटम. तो आई एम डूइंग, देखो पहले सिंपल चीजों को कोड करते हैं. अब मैं लिख रहा हूं पुश ऑल adjacent edge of start vertex लिख दें. स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स, ये ज्यादा ठीक है. SVI
अब ये काम कैसे की जाएगी, देखो कितने सिंपल है, वो हमें इंडेक्स ही मालूम है। मतलब हमें ये देखना है, गौर से देखो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स, गौर से देखना, कि कौन कौन से कॉलम में आपका नॉन जीरो आइटम है। तो लूप चलेगी कितनी टाइम्स, इसी बात को लिखना है। ये मैं अभी उस लाइन नंबर 18 पे जो लिखा हूं, इस डाटा को हम लोग यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एक इंडेक्स प्लेस कर देंगे, मान लो सपोज इंडेक्स के असाइंस 0, के लेस देन any problem in writing this statement। तो मैं स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स जहां पे है उस पर्टिकुलर रो के अंदर ट्रैवर्सिंग कर रहा हूं एंड देख रहा हूं कि उस मैट्रिक्स के अंदर का कौन कौन सा आइटम नॉन जीरो है। इफ नॉन जीरो होगा वही तो एडजेसेंट होगा। आया नहीं, आर यू गेटिंग। अभी हम कोड को एकदम सिंपल रख रहे हैं, देख रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू लर्न मोर इजिली। अच्छा, जो जो नॉन जीरो होगा, अब इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, जो जो नॉन जीरो होगी उसको कहाँ पुश करना है, स्टैक के अंदर। तो क्या हमें एक स्टैक नहीं क्रिएट करनी चाहिए, स्टैक टाइप की कोई ऑब्जेक्ट एस असाइंस न्यू स्टैक, एक स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई एस। अब उस स्टैक तो उस अप्रोच से बना हुआ है, तो एस डॉट पुश पुश, और पुश के अंदर तो एज इंफॉर्मेशन भेजना है, न्यू एज, एंड एज इज मेड बाय स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स कॉमा। अच्छा एक मिनट वेट करो, कॉमा कॉमा क्या लिखें, मैं छोड़ा आपके लिए, के। वेरी गुड विशाल, गुड आंसर भाई, मजा आ गया, क्योंकि केथ वैल्यू ही बता रहा है डेस्टिनेशन का इंडेक्स। सो यू डिड इट। इस तरह से क्या हुआ, one edge informations edge is being created and pushed into a stack। Till this point all are comfortable। Once loop terminates, क्या स्टैक के अंदर स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स का सारा एडजेसेंट एज पुश नहीं हो गया।
हो गया ना? हो गया ना? इस फिगर को जरा एक बार बड़ा करके देख लेते हैं। अब यहाँ क्या था, जब तक सारे के सारे वर्टेक्स विजिट ना हो जाते हैं, अब पूरी बात को समझो, जब तक सारे के सारे वर्टेक्स विजिट ना हो जाते हैं, तब तक क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। while all vertices are not visited, हमने अभी तक इसको नहीं लिया। ठीक है, तो इनिशियली गौर से देखना, शुड आई टेक विजिटेड ऑल्सो, जब तक सारे के सारे विजिट नहीं हो जाते। लेट्स टेक वन विजिटेड वर्टेक्स इंडेक्स, विजिटेड एंड विजिटेड जो है कितनी साइज की बनेगी, ये जरा हिंट दो। विजिटेड एरे की साइज कितनी होगी? अरे जितना वर्टेक्स होगा उतना ही ना। एम आई राइट? न्यू छूट गई है, इज इट करेक्ट? तो शुड आई राइट डायरेक्टली 4 और द स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वो सही है? कौन सा दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट? विच इज बेस्ट? यस, कन्विंस। नाउ इनिशियली गौर से देखना, विजिटेड एरे के अंदर स्टोर होंगे 1 by 1, तो इसके लिए हम एक इंडेक्स ले ले, वी आई and initially set to 0. Now start vertex index, हम इंडेक्स सिर्फ रखेंगे, तो इनिशियली तो स्टार्ट दिया हुआ है, गौर से देखोगे इनिशियली स्टार्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम तो एक हमारा विजिटेड होता ही है। तो हमने क्या किया, इनिशियली यहाँ पे हमने स्टार्ट वर्टेक्स को डाल दिया। Is there any problem till this point? ये फिगर देखो, should I maximize this screen? Initially फर्स्ट वर्टेक्स तो मेरा विजिटेड है, एंड गौर से देखना, कुछ चीजों को अगर सिस्टमैटिक करेंगे तो हमारा वर्क ज्यादा इजी होगा। While all vertices are not visited, इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कैसे तय कर पाए कि सारे के सारे वर्टेक्स विजिट हो गए कि नहीं? मैं कमेंट में लिख के छोड़ता हूं, while all vertices are not
y at visited vertex in specific index number, इस y का आंसर ये हमारा ट्रेस है जो पढ़े थे। क्या हम लोग विजिटेड एरिया लिख के बताए थे कि नहीं बताए थे विशाल? हेलो। हाँ, ये देखो स्लाइड। हाँ तो सर अभी हम जब चेक करेंगे कि अगला वर्टेक्स ऐड करने से पहले कि वो वर्टेक्स है क्या नहीं, तो पूरे एरे में चेक करेंगे ना। पहले रुको, पहले रुको, पहले मेरी बात को सुनो। हाँ। अभी स्टैक पुश वगैरह सब भूल जाओ। ये प्रोसेस क्या था, जब तक सारे के सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हो जाएंगे, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। हाँ या नहीं? हाँ। इनिशियली स्टार्ट वर्टेक्स जो जहां से हमें काम शुरू करना था, हाँ। जैसे इस फिगर में देख रहे हो सी के पास एरो लगा हुआ है, तो मैंने विजिटेड नाम के एरिया में डायरेक्टली सी को कॉपी कर दिया। बराबर। यही काम तो कर रहा हूं कि जब तक हमारे इस विजिटेड एरिया में सारे के सारे वर्टेक्स ना आ जाएं, हाँ। तब तक हमें ये काम करते रहना है। तब ना ये स्टेप हुआ, फिर अगला स्टेप हुआ, फिर अगला स्टेप हुआ, एंड सो ऑन। देख रहे हो ना, यस। विजिटेड एरिया में एक एक करके बढ़ता चला जा रहा है हाँ बस। तो सर वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे क्यों डाला? वो तो हम सिंपली ऐड भी अगर किया तो नहीं नहीं, सिक्वेंशियली ऐड होते जाएगा ना। अरे भाई स्पेसिफिक इंडेक्स पे रख, कहाँ है स्पेसिफिक? ये वो अभी भी आए। विजिटेड, अभी देखो ना यहाँ, अभी विजिटेड एरिया में कौन सा इंडेक्स पे सी है? अभी जीरो। तो फिर यही काम तो वहां किए हैं। तो ऐड सिंपली ऐड भी करेंगे विदाउट इंडेक्स स्पेसिफाई किए तो भी हो जाएगा ना वो काम। अरे भाई कहाँ ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए एरे में इंडेक्स नहीं चाहिए? एरे में स्टोर कैसे करोगे आइटम? कैन यू स्टोर आइटम इनटू एरे विदाउट इंडेक्स? हाँ। नो सर। ये नो। तो वही तो कर रहे हैं, यस। हाँ। एरे में स्टोर करने के लिए इंडेक्स चाहिए ना, सी जीरो लोकेशन पे स्टोर है कि नहीं है? हाँ। अगर एरे का नाम विजिटेड होगा तो हम सी को जीरो लोकेशन में कैसे स्टोर करेंगे? विजिटेड हाँ। ब्रैकेट में जीरो लिखेंगे ना। हाँ। वही तो कर रहे हैं, यस। यही तो कर रहे हैं। अब वी हाँ आई सर को समझा। मैंने इन, हाँ अब समझ में बात आई। हाँ। हाँ। इनिशियली मैंने वहां रख दिया। अब इनिशियली जब वहां रख दिया तो वी आई को हम एक इंक्रीमेंट कर दिए। वी आई जो मैं लिया हूं विजिटेड एरे के अंदर आइटम को रखने के लिए, गॉट इट? एंड एक आइटम को जब वी आई विजिटेड एरे के अंदर रख दिए तो वी आई को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। तो राइट नाउ विजिटेड एरिया के अंदर वन आइटम है, ये वी आई से ही पता चल गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सारे वर्टेक्स विजिट नहीं हुए? व्हाइल ऑल वर्टिसेस आर नॉट विजिटेड, कीप ऑन डूइंग द टास्क, कीप ऑन डूइंग द टास्क। अब ये टास्क क्या है? यही, ये चीज को कैसे लिखेंगे? अब नीचे को बोलो, वो तो एक इनिशियली बताए। अब देखो तो ये चीज बहुत इजीली लिखी जा सकती है। वाइल, देखो गॉड से, किसी ने, हाँ वेरी गुड, हाँ राइट, वी आई को अगर कंपेयर कर लेंगे उसी से हमें पता चल जाएगा कि सारे वर्टेक्स विजिट हुए कि नहीं। वी आई इज लेस देन, नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हो, लेस देन वर्टेक्स डॉट लेंथ। वेरी गुड। जैसे ही इसके अंदर आइटम हो गए, इसका मतलब सारा वर्टेक्स विजिट, मेरा प्रोसेस कंप्लीट। लाइन नंबर 21 पर जो लूप लिखी हुई है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? नहीं है ना? नो। गुड। अब सबसे पहला टास्क क्या करना है, देखो
सबसे फर्स्ट टास्क इनिशियली लाइन नंबर 18 तक वी आर कंफर्टेबल। अब क्या करना है, जो अभी जो करेंटली वर्टेक्स विजिट हुआ, करेंटली कौन सा वर्टेक्स विजिट हुआ, 0 क्यों लिख रहे हो, कौन सा वर्टेक्स जो स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स दिया था वो, दैट इज 1। हाँ, अब जो ये वर्टेक्स विजिट हुआ है ये मेरा करंट वर्टेक्स है, इसी करंट वर्टेक्स के लिए काम करना है। तो माई करेंटली बीइंग वर्टेक्स क्या हो गया, स्टार्ट वर्टेक्स। देखो गौर से, है ना, एंड जो काम मैंने नीचे लिख दिया है स्टार्ट वर्टेक्स के लिए, उसको रिप्लेस करके मैं कर दूंगा करंट वर्टेक्स। अब मैंने यहाँ स्टैक ले लिया, बस अब चीजों को समझ जाओ। नाउ इसको मैं यहाँ कट कर रहा हूं एंड मूव कर रहा हूं। उस ऑल एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ करंट स्टार्ट वर्टेक्स के जगह पे मैं कर दूंगा करंट वर्टेक्स। इससे ये प्रोसेस हमारा जनरलाइज हो जाएगा। और जहां मैं स्टार्ट वर्टेक्स लिखा, देख रहे हो लाइन नंबर 21 में स्टार्ट वर्टेक्स इंडेक्स की ही वैल्यू करंट वर्टेक्स है ना। if I am making changes into line number 25, replacing start vertex by current vertex, so you shouldn't have any problem. Yes, now मेरी काम ही खत्म हो गई, उस मतलब मेजर काम हो चुका, स्टैक के अंदर सबको पुश कर दिए। एंड पुश कर देने के बाद अगला स्टेप क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, हमें स्टैक से तब तक पॉप करना हो रहा था, हमें स्टैक से तब तक पॉप करना हो रहा था, करना पड़ रहा था जब तक कि एम्प्टी, नो नो नो, एम्प्टी हो सकता है बीच में भी एम्प्टी हो जाए, जब तक स्टैक से वैसा एज नहीं 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 नहीं, नॉट सुमित, स्टैक से हमें तब तक पॉप करना है। पहले प्रोसेस क्या था, पहले लेट मी राइट डाउन, I shall pop one item from a stack, and naturally after popping we will get edge E, and edge is now let's define now edge is defined. Just a minute. Okay, back. अब देखो तो
सबसे पहले एक एज निकल गया। अब मैंने क्या कहा था, चेक करना है अभी जो एज निकला है वो उस एज का डेस्टिनेशन वर्टेक्स विजिटेड है कि नहीं है। ये चेकिंग कैसे करेंगे, ई डॉट, देखो गौर से, ई डॉट डेस्टिनेशन वर्टेक्स को सर्च करेंगे विजिटेड एरे के अंदर। क्या इसके लिए एक छोटा सा अलग से फंक्शंस बना लें। सिंपल sequential search, just see here, हमने एक छोटा सा बनाया सर्च फंक्शंस। इस सर्च फंक्शंस को मैं क्या पास कर दिया, एरे पास कर दिया। गौर से देखोगे, एंड इस एरे के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम अभी स्टोर्ड है वो मैंने पास कर दिया। एनी ऑब्जेक्शंस तो बताओगे, कोई कंफ्यूजन। सो सर्च फंक्शंस का काम क्या है, सर्च फंक्शंस ने रिसीव कर लिया एरे को और उस विजिटेड एरे के अंदर कितने आइटम है उसको, एंड अब सर्च किसे करना है, उस इंडेक्स को, द आइटम टू बी सर्च्ड, उसे राइट। है ना। अब हम सर्च फंक्शंस को ऐसे वहां से कॉल कर लेंगे। सर्च फंक्शंस को मैंने कॉल किया, विजिटेड एरे पास किया, एंड देन टोटल नंबर ऑफ आइटम वी के पास है, एंड की जिसे सर्च करना है। Search functions will return the positions value key at which place item is found or not found. अब सर्च फंक्शन तो बहुत आसान है, आप एक सर्चिंग करोगे, एक इंडेक्सिंग प्लेस कर दोगे, ये सिक्वेंशियल सर्च हो गया, वन बाय वन सर्चिंग। वाइल आई लेस देन, पूरे एरे में सर्च नहीं करना है, एरे के अंदर जितने आइटम है उतना ही में सर्च करना है। आई लेस देन टोटल नंबर ऑफ आइटम, ये जो वी को जो रिसीव किया है ये नंबर ऑफ आइटम स्टोर्ड है, एनओ में लिख दिया हूं, नंबर ऑफ आइटम। ये सिक्वेंशियल सर्च की कोडिंग हो गई। आई प्लस प्लस इफ, गौर से देखना, कीज फाउंड इनटू एरे, ये विजिटेड क्या है, एरे है ना, मैं यहाँ नाम ही अलग अलग बदल दिया हूं। अगर एरे के अंदर आयत लोकेशंस की वैल्यू अगर मैच कर गई की से, दैट मीन्स एलिमेंट इज फाउंड एट ith प्लेस। अगर पूरी फॉर लूप कंप्लीट हो गई और नहीं मिला, दैट मीन्स एलिमेंट इज फाउंड एट -1th प्लेस।
कहने का मतलब -1 तो इंडेक्स हो ही नहीं सकता है, दैट मीन्स एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर सर्च फंक्शन, देखो गौर से, अगर सर्च फंक्शन ने -1 रिटर्न किया, इसका मतलब विजिटेड एरे के अंदर एलिमेंट नहीं मिला, E.dvi, मतलब एज के डेस्टिनेशन वर्टेक्स नॉट फाउंड इन विजिटेड एरे। अगर -1 मिला तब, तो वही मैं लिख रहा हूं, इफ POS is equals to -1, that means element not found। यहां तक क्लियर है ना? एलिमेंट नहीं मिली, और एलिमेंट नहीं मिलती है तो क्या की जाती है? बैक ट्रैक। क्या क्या बोल रहे हो भाई? अभी एज निकला है स्टैक से, अभी कई एक सारा काम है, अभी एज निकला है स्टैक से। हाँ, उसको विजिट करना है तो उसको विजिटेड एरे के अंदर ऐड कर देंगे, और भी कई एक काम है। नाउ दैट वर्टेक्स इज बीइंग विजिटेड, सो यहां पे स्टोर किसे कर देंगे? E.dvi को। और साथ साथ मैंने ये भी कहा आपको दैट इस एज को ग्राफ में ऐड करना है, इस एज को ग्राफ में ऐड करना है। ऐड एज ई, क्योंकि एक नई ट्री बनती है ना, याद होगा। डीएफएस या बीएफएस का आंसर किसी भी इस प्रोसेस में आंसर क्या होगा? स्पैनिंग ट्री। सो दैट इज अ न्यू ग्राफ। हाँ या नहीं? यस। सो add edge E into a spanning tree, into a spanning tree. Should I construct? अभी तो स्पैनिंग ट्री देखो गौर से, ये तो आपका इनपुट वर्टेक्स हो गया। लुक एट दिस। और आउटपुट के लिए भी चाहिए, फिर हमें स्पैनिंग ट्री के लिए भी चाहिए। ये एक अलग ग्राफ है, ठीक है, दोनों ग्राफ में तो वर्टेक्स सेम होगा, तो मैं थोड़ा कंप्रोमाइज करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दोनों ग्राफ में तो सेम वर्टेक्स होगा, एज अलग अलग होंगे, इसलिए मैं सिर्फ स्पैनिंग ट्री को स्टोर करने के लिए ये क्रिएट कर लेता हूं, और यहां लिख देता हूं स्पैनिंग ट्री, and initially no vertex, sorry, no edge। आ गई बात समझ में? Is it clear?
Why I have taken this spanning tree matrix? क्योंकि DFS का आंसर भी तो आपको वही मिलेगा ना, ग्राफ के फॉर्म में, इनपुट भी ग्राफ, आउटपुट भी ग्राफ, और दोनों के लिए वर्टेक्स में कॉमन रखा। अगर प्रॉपर ऊप्स अप्रोच बनाएंगे तो साफ अलग अलग होगा। नाउ लेट्स सी दिस। अब इस एज ई को ग्राफ में ऐड करना है, ये काम दिखता भारी है लेकिन कितना आसान है। अरे एज को ऐड करने का मतलब आपको सोर्स वर्टेक्स पता है, डेस्टिनेशन वर्टेक्स पता है, स्पैनिंग ट्री के अंदर जाके आपको वन स्टोर कर देना है। कहां पे, कोई हिंट दो। ई डॉट सोर्स वर्टेक्स इंडेक्स पर एज वेल एज ई डॉट डेस्टिनेशन वर्टेक्स इंडेक्स पर। और चूंकि ये गौर से समझना, ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो दोनों इंडेक्स हो जाएंगे ना ये वन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स। आर यू कन्विंस्ड? एवरीवन, लाइन नंबर 46 47। तो ये सुनने में कितना भारी लगता है कि आई हैव टू ऐड एज इनटू ट्री, और काम कितना आसान है, उस इंडेक्स लोकेशंस पे जाके हमें वन स्टोर कर देना है ना। अब लेकिन ये हुई तब ना, लेकिन जो सर्च ने अगर कहा कि फाउंड, इसका मतलब विजिटेड मिला, तो दोबारा पॉप करना है, ये भूल गए थे। यू हैव टू पॉप अगेन। याद होगा, कोई फिगर दिखाते हैं आपको, देख रहे हैं यहाँ पे, इस फिगर में देख रहे हो ना, 3 टाइम्स पॉप। वाई? क्योंकि फर्स्ट पॉप विजिटेड मिला, फिर सेकेंड पॉप विजिटेड मिला, फिर सेकेंड थर्ड पॉप एंड सो ऑन, तो तब तक पॉप। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल, हमें यहाँ पे प्रोसेस, हमें यहाँ भी अभी समझ नहीं आ रही हाउ लॉन्ग टू रिपीट, सो आई एम राइटिंग ट्रू। लेट्स रिपीट infinitely and we'll get some path. Now first pop, अगर ये काम हो गया, देख लो गौर से, इफ दिस इज द टास्क, अभी गौर से देखो कौन सी करेंटली विजिटेड वर्टेक्स है, इज इट नॉट दिस? एंड मैं यहां अगर ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी? लाइन नंबर 46, क्योंकि मेरी करेंटली कौन सी जो वर्टेक्स विजिट नहीं हुआ है उसी को तो विजिट करना है, तो वही मेरी करंट वर्टेक्स हो गई। करंट वर्टेक्स को विजिट कर लिए, एंड ये प्रोसेस अगर सेटिस्फाई हुआ, देन वी आर कमिंग आउट ऑफ द व्हाइल लूप। बट एक बात याद रखना, ड्यूरिंग पॉप ऐसा हो सकता है कि स्टैक बिकम्स एम्प्टी। इफ स्टैक बिकम्स एम्प्टी, he has to be made to null checking, क्योंकि हम एम्प्टी पॉप, मेरा रिटर्न क्या कर रहा है, एम्प्टी स्टैक से अगर पॉप करते हो
तो नल रिटर्न करता है। और ये नल रिटर्न कर हमारा ये हो गया कि हमारी स्टैक खाली हो गई, स्टैक निकालने के लिए मिला ही नहीं, और स्टैक से कुछ नहीं मिलेगा तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। प्रोसेस कंप्लीट, क्योंकि स्टैक खाली हो गई थी। लास्ट फिगर देखोगे, लास्ट फिगर pop, 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 pop. At this point, the stack is empty. Process complete. हमने क्लियरली सारा समझा दिया था, बट एक्सप्लेन बनाना तो था। चलिए, प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, गौर से देखो। फिर से करंट 47 में, फिर जब लूप रिपीट होगी, फिर ये करंट वर्टेक्स का सारे एडजेसेंट को स्टैक में पुश कर देगा। तो आप देखोगे कभी भी यहीं से प्रोसेस, ये वाइल लूप की चेकिंग की कोई बहुत, ठीक है, लूप रिपीट करने के लिए हो रहा है, यहाँ पे हम नल भी ट्रू लिख करके काम कर सकते हैं, बट लेट इट बी, सही है, रहने दो। अब समझने में किसको कहाँ पे क्या परेशानी है, जो डीएफएस डिस्कस की एग्जैक्टली वही है कि नहीं है। Shall we run the code and see what answer we are getting, whether is this working or somewhere is it giving error? Let us see. Now DFS process. तो हम तो देख चुके हैं, DFS को जस्ट कॉल कर लेंगे, we'll get the answer main के अंदर से। We'll just call the DFS function. अब जब DFS फंक्शन कॉल करेंगे तो DFS फंक्शंस ने स्टार्ट वर्टेक्स क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स से चीजों को पढ़ते हुए काम किया होगा, और अगर सब कुछ सही होगा तो स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ होगा उसके अंदर। तो हम इस मैट्रिक्स को अगर प्रिंट करके देख लेंगे तो मेरा काम हो जाना चाहिए, है कि नहीं? लेट्स सी। फॉर int I assigns 0 indexing, I less than a spanning tree dot length I plus plus है ना? ये एरर क्या कर रहा है भाई? स्पैनिंग ट्री सेमीकोलन मिसिंग, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो बस मैट्रिक्स में रीड करना है और तो कुछ नहीं करना है। फिर अगेन सेकेंड लूप, फॉर आई वुड से j assigns 0, j less than a spanning tree के ith dot length till then j plus plus। बस सारे इसको तो प्रिंट कर देना है। होपफुली
सब कुछ सही होगा, लॉजिक्स एज पर द लॉजिक, कहीं मिस्टेक होगी मान लो थोड़ी देर के लिए, देन वी हैव टू आई जे जेथ वैल्यू को प्रिंट कर दिया। मैं एक ही लाइन में इसको प्रिंट करता हूं और प्रिंट करने के बाद स्पेस छोड़ता हूं। Okay, and once this gets printed, this is simply we are having इस लाइन में अच्छा इंट छूटा हुआ। Okay, so now pray to God after this much time हमारा चीजें ठीक होती है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो somewhere the problem comes, this is the answer what we got। अब इस आंसर को उससे टैली करके देखना है कि क्या ये डीएफएस एक ऐसा बन सकता है कि नहीं। ये हमारा जो आंसर हो गया, ये हमारा स्पैनिंग ट्री हुआ, ये आंसर्स हो गया। ये हमारा, इसको चेंज कर देते हैं डीएफएस स्पैनिंग ट्री। डीएफएस स्पैनिंग ट्री हुई। अब नाउ take this snapshot, I'll share the code। Take this snapshot, I will share the code, and you have to manually verify that this is right DFS or wrong DFS। फिगर तो वही है, ये जो फिगर है देख लो ना यहीं पे, कौन सा फिगर के लिए किए थे DFS। ये था ना फिगर, डेप्थ फर्स्ट सर्च। सब कौन सा था छोटा सा फिगर, now by changing output, अच्छा शायद हम लोग ये फिगर, यस। अब देखो तो गौर से, ए बी सी डी, ए टू बी, let's check and find the task। Are you getting?
हमें ये वेरीफाई करना है ये सही है या नहीं है। इसको देख के ट्री बना डालो, सीधी सी बात है। जो ये फिगर कर रही है उस फिगर के अकॉर्डिंगली पेपर को बनाओ। क्या फिगर? कैसी फिगर बनी? एनीवन कैन शेयर मी? कैन एनीवन शेयर मी? I'll show you what figure I have drawn. I'll show you. Let's just wait. ठीक है? This was the input figure and the output figure. What I got as per this answer, what is visible is the C. Can you see my screen? A to C, then C to B. एक मिनट गलती गलत 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 A to C and C to B and A से भी गए. Look at this. यहां से यहां गए और यहां से यहां गए. In any way you can think. अच्छा नहीं, एक सेकेंड, लेट मी रीड्रॉ. हम लोग तो गए थे, स्टार्ट कहां से किए थे? बी से. बी से शुरू किए थे ना. तो लेट्स ड्रॉ फ्रॉम बी. बी, बी टू सी, सी टू ए, बी टू सी, बी टू सी, सी टू ए. बी से सी कनेक्टेड है. जाके देख लो फिगर में, बी टू सी इज कनेक्टेड मिलेगा. बी टू सी, सी टू ए, टू डी.
This is the figure which I am getting. You will find all these connections into that answer figure. Into the answer figure. Please verify. I shall share the code, read it carefully and implement them. Okay, thank you. Hope you would have enjoyed, you would have understood the implementations. जब मैंने डिजाइन को इतना सिंपल रखा, now your task will be, can you convert the same problem and answer using OOPS design? Your task is, your task is implement the DFS using OOPS approach. Using OOPS. आप सेम लॉजिक है, सब कुछ वही है. OOPS डिजाइन से आप सोचिए एंड रीकोडिंग करिए. Okay, thank you. I'll share the code and hope you would have understood and enjoyed some. Okay, thank you. Bye.